हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो इस बार अब थोड़ा सा चीज़ें एनहेंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट पे कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पर एक सेशन रखेंगे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इंटरव्यू में जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है। सिंपल इंटरव्यू है, बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं है, बट वी हैव टू लर्न ऑन दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 ऑलरेडी बज चुके हैं रात के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, मैं थोड़ा नीचे रख लेता हूँ ताकि इधर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, सो इसको ऐसा क्या है, कुछ तो है जो अच्छा है। ये मेरा माउस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि इजीली पता लग जाए कि क्या हो रहा है। ओके ओके, सो हेलो गाइस, चलो करते हैं स्टार्ट फिर। तो मैं यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देनी है और क्या क्या बोलना है। और इंट्रोडक्शन मेरे को लगता है कि बहुत ठीक डिसेंट गई थी, एंड इट्स गुड एक्चुअली, इट्स गुड एक्चुअली। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या करनी चाहिए, ठीक है। सो फर्स्टली आई विल ट्राई टू दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट इट विल बी लाइक ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या हमारा कुछ पूरा ब्रीफ होना चाहिए कि हमने किया क्या है, ठीक है। तो लेट्स से थैंक्स फॉर आस्किंग। पहले तो एक बार ग्रीटिंग्स कर दो अगर तुमने करनी है तो मैं लिख देता हूँ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर आस्किंग मी, थैंक्स फॉर गिविंग मी, सॉरी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस opportunity to introduce myself, introduce introduce myself. First of all, thanks for giving me this opportunity to introduce myself. Okay, so this one is like is greetings है। देना है दे दो, नहीं देना है मत दो, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो एंड मेन इंटरव्यू का ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सो अगर लगाना है अलियास लगाना है, कुछ भी लगाना है लगा दो। तो सो आई एम अभिषेक कुमार गुप्ता। आई एम फ्रॉम, जहाँ से आते हो वहाँ से दिखाना है कि हाँ भाई यहाँ से आता हूँ, लुधियाना। मैं लुधियाना का, तो मैं लुधियाना का, तो कहीं का भी डालना है। वी हैव अ प्लेस और जो भी। तो आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। ओके, सो नाइस। सो ये तो दोनों चीज़ें हो गई। देन थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है हमारी ग्रेजुएशन। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2023, लेट्स से 2023 ओनली, हाँ करेक्ट है, राइट। तो हाँ, 2023 I did my graduation in 2023 from Chandigarh, Chandigarh group of colleges, technical campus, Janjeri. Okay, in BTech मैं बड़ा भी लिख सकता था, बट मैं इतना बड़ा नहीं लिख रहा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी समथिंग, ये मेरे को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता। तो मैं ये बोलता कि आई डिड माई ग्रेजुएशन 2023, डन फ्रॉम लेट्स से इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर देख लेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आई फ्रॉम पंजाब लुधियाना,
Ludhiana, Punjab. I did my graduation in 2023 from in college from Chandigarh Group of Colleges. Okay, and Technical Campus Janjiri. Okay, so BTech Computer Science, BTech in Computer Science, BTech Computer Science. Okay, so nice according to this. एंड सो अब क्या करना है मेरे को? अब मेरे को बताना है भाई कि अब मैं क्या कर रहा हूँ. ओके, सो फॉर दैट व्हाट आई डिड, आई विल डू, आई हैव वर्क एक्सपीरियंस, I have total work experience, total work experience. If you are having means already there in a first company, so you have already, you can say that I have experience in my domain, or I am experience in total experience is 3 years, whatever, 3 years and 2 months. I have total experience in the current company, experience in the experience or total experience in the current company. In the current company, total year of experience in the current company 3 years जो भी. So total years of experience, totals of 3. So let's say we can check it in ChatGPT, not a problem. ठीक है. So I have a total experience in current company for 3 years and 2 months, whatever, and I have job responsibilities to enhance features and technical maintenance in their product. So I have one thing जो मैं भूल चुका हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार जानना चाहिए था. I have total experience in current company name 42 years as 3 years and 2 months. I have job responsibility to enhance features and technical maintenance in their product, and in their product. Okay, so now, and during this I gained skills in C#.net, language, or language. .NET is actually framework. .NET framework है. ओके, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज है C#. ओके, .NET में VB भी यूज हो सकता था, बट नहीं होता. C# उसमें बहुत ज़्यादा .NET में कंपेटिबल है. दैट्स .NET इज़ अ फ्रेमवर्क. .NET कोर और .NEट समथिंग, इट्स अ फ्रेमवर्क थिंग्स. उसके अंदर जो मेथड्स है, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. But C# is a language. Okay, so I have gained skills in C# language. Some databases also. Language in front end, I'm using gain some language, Angular. So Angular later. Angular as a C# language as a backend, Angular as front end,
and backend, and Angular as a front end, C# as a front end. Okay, so during this I gained skills in C# language as a backend and Angular as a front end. I have knowledge about knowledge about, okay, so some databases also, and whatever the thing is, some databases like SQL Server, Mongo, and BigQuery. Okay, I have some experience of deployment also, using Kubernetes. Experience with the deployment, and BigQuery. Okay, some databases like SQL. Okay, so my main goal is to become entrepreneur. ब्रो, मेरे को नहीं आता एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग, बट कोई बात नहीं. ओके, एंटरप्रेन्योर, पीरोरी, एंटरी. अच्छा, एंटरी ऐसे करते हैं, एंटर को आर कर दिया, देन प्री इन्योर एंटरप्रेन्योर. ओके, बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड हेल्प्स organization to. Yeah, that's all about me. Thanks. That's all about me. Thanks for asking. Once again, thanks for asking. That's all about me. Once again, thanks. Okay, so I completed my graduation. Okay, so I can enhance this all things from the ChatGPT things. क्या बोलते हो सर? Okay, so यहाँ पर new chat, whatever thing. Okay, so I can make it rephrase and for interview if you want to add so that it will be more attractive, then you can suggest me. Otherwise, rephrase best reintro.
So for an interview, your introduction should be 60 to 90 seconds. Okay, confident and natural, focus to your education, experience, skills, what you bring to do the role. Avoid mentioning long-term goals. I want to become an entrepreneur. Just that interview specifically about future plans, because it can make seems like you don't plan to stay with the company. Okay, so that's a main thing. Okay, I will work on this. Okay. So good morning, good afternoon. Good morning. Thank you for giving me to introduce myself. My name is Abhishek Kumar Gupta. I am from Ludhiana, Punjab. I completed my BTech. In Computer Science in 2023, and from Chandigarh Group of College, Technical Campus, Janjeri. I completed my BTech in Computer Science Engineering in 2023 from Chandigarh Group of College, Technical Campus, Janjeri. That's very perfectly. And currently I have a 3 years and 2 months experience at 42 years mobility systems, where I work on as a software. Worked as a software developer. My job responsibility is to develop the new features, enhance existing functionalities. Is to develop the new features, enhance existing functionalities, and maintain enterprise products while ensuring performance and reliability. मेरे को याद नहीं रहने वाला तो maintain enterprise level product while ensuring performance and reliability. ये मेरे को याद नहीं रहने वाला प्योर. तो ऐसा करूँगा मैं कि my job responsibility is to develop the new features, enhance existing features, functionalities, and technical maintenance on the product, maintenance of the product, performance and reliability, ensuring performance and reliability. And over the course of the experience, I have built a strong built expertise in strong तो नहीं, but I have built strong भी बोल सकते हो, but इतने confident भी ना हो जाओ कि वो लगा ही दे तुम्हारी. तो I have gained experience in C# ASP.NET Core. For backend development, and for the Angular for the front end development. And I also have worked extensively with I have also worked extensively I have worked with the database such as SQL Server, MongoDB, and Google BigQuery. Additionally, I have gained some experience with the deployments and cloud native technologies, including gained experience with the deployments and cloud native technologies, including Kubernetes, which helped me to understand the complete software development lifecycle. I've said beyond just coding. That is actually good, which helped me to understand the complete software development life cycle beyond just coding. One thing I enjoy most about software development is solving real world problems, learning new technologies, and continuously improving and quality performance of applications. I like taking ownership of my work and collaborating with my team and deliver reliable solutions. And I'm looking for an opportunity where I can take more challenging projects, continue growing as a software engineer, and contribute meaningful to the organization, to the success. That's that's introduction about me. That's introduction about me. That's all about me. That's all about me. Thank you. That's introduction about me. Yeah, that's introduction about me. Thank you. Okay, that's a very good thing. इसमें पता लगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए. ठीक है. ओके, सो इसको ख़त्म करते हैं. अब आते हैं न्यू वाले पे. ठीक है, तो इस वाले को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मैं आऊँगा. थैंक यू फॉर गिविंग मी allowing me to introduce myself. Thank you for allowing me to introduce myself.
allowing me to introduce myself. That is very natural actually. So we can need to practice on this. Okay, so मुझे भी practice करनी है. So good morning or good afternoon, whatever the good morning and good morning. Good morning. Thank you for allowing me to introduce myself. My name is Abhishek Kumar Gupta. I am from Ludhiana, Punjab. I completed my BTech in computer science engineering. I completed my BTech in Computer Science Engineering in 2023 from Chandigarh Group of College Technical Campus, Chanjeri. Currently, I have work. Currently I have 3 years and 2 months experience, work of experience at 42 Gears Mobility Systems as a software developer. And my primary responsibility is to my job responsibility is to develop the new features and enhance the existing features functionalities, and maintain enterprise level product while ensuring performance. No, maintenance. No, technical maintenance. Technically and technical maintenance of their product while ensuring performance of their product. Okay, so perform the technical and existing functionalities and perform technical technical maintenance on their product while ensuring performance and reliability. And over the course of my experience, I have built I have gained gain expertise in C#. Over the course of the period, I have gained expertise in C# and ASP.NET Core for the backend development, Angular for the front-end development. I have worked on databases like SQL Server, Mongo, and Google BigQuery. Additionally, I have hands-on. I gained hands-on such experience with the deployments. Additionally, I gained hands-on experience. Additionally, I have gained hands-on experience on with the deployments and cloud native technologies like Kubernetes, which have helped me to understand which has helped me to understand the complete flow of the life cycle of the understand the complete software development life cycle beyond the beyond just coding. Development life cycle beyond just coding. Okay, one thing I enjoy most about software development is solving real world problems, learning new things, technologies, and continuously improving the qualities and performance of application. One thing I enjoy the most about software development is solving the real problems, learning the new technologies, and continuously improving the quality and performance of the application. And I like taking ownership. Of my work and collaborating with my team to deliver the reliable solutions. I'm now looking for a opportunity where I can take more projects, and continue growing as a software engineer and contribute meaningfully organization success, and contribute meaningfully to the
contribute meaningfully to the organization success. That's a brief introduction about me. Introduction to me. That's a brief. That's a brief introduction to me. That's all about me. Thank you. Okay. So मैं इसमें changes करूँगा थोड़े से. ओके सो इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ें याद होने वाली हैं. ठीक है, नॉट एन इशू. एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है बताने के लिए. मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा है. ठीक है, सो लेट्स सी. अगर मैं इसको एक देता हूँ कि हाँ भाई 60 सेकंड में मेरे को पढ़ना है. ठीक है, तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ 60 सेकंड में? ठीक है, let's see 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 one. Okay, so let's start on this. Let's see. Good morning and thank you for allowing me to introduce myself. My name is Abhishek Kumar Gupta. I am from Ludhiana, Punjab. I completed my BTech in Computer Science Engineering in 2023 and from Chandigarh Group of Colleges, Technical Campus Engineering. Currently, I have 3 years and 2 months experience at 42 years mobility systems. I'm where I have worked as a software engineer for a software developer. My primary responsibility is to develop the new features, enhance existing features, and perform technical maintenance in that product and ensuring performance and reliability. Over the course of the experience, I have gained experience in the 42 C Sharp ASP.NET Core for the backend development and for the Angular for the front end development. And I have worked on this extensively, and that I worked on databases such as SQL Server, MongoDB, and BigQuery. Additionally, I have gained BigQuery. Additionally, I have gained hands-on experience with the deployment. Additionally, I have gained hands-on experience with the deployments and cloud-native technologies like Kubernetes, which helped me to understand the software development life cycle just beyond coding. Beyond just coding, one thing I enjoyed most about software development is to solve real-time problems, real-world problems, learning new technologies, and continuously improving the quality and performance of the application. Improving the quality and performance of the application. I like taking ownership. I like taking ownership of my work and collaborating with my team to deliver the reliable solutions. Now I'm looking for the opportunity where I can take a more opportunity where I can take a more responsibility, more challenging projects, continue growing as a software developer, engineer, contribute meaningfully to the organization success. That's a b that's about introduction to me. That's introduction to me. Thank you. ओके, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें भूलूंगा मैं, बट आई नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. ओके ओके, सो आज के लिए अभी के लिए ये इतना करते हैं. लेट्स सी इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़रूरी है. ठीक है, सो बेसिकली एक चीज़ पूछेगी, व्हाट इज़ द ऊप्स. ऊप्स क्या होता है भाई? ऊप्स क्या होता है? बताओ भाई, ऊप्स क्या होता है? सो लेट्स सी, मैं एक बार यहाँ पर ऊप्स पे जाता हूँ. ऊप्स पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पर एक चीज़ दिखी जाती है. व्हाट इज ऊप्स? सो हेयर इट इज द थिंग. मैं यहाँ पर बोलता हूँ गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी शॉर्ट नोट ऑन
explain oops. Explain oops. So for the interview, don't just define oops, explain it in order, definition, why it will be used, 4 pillars, real world example. Okay, so this one is very important actually. So what is oops? Definition. Object-oriented programming is a programming paradigm in which we represent real-world entities as objects. Each object contains a data, properties, and behavior methods. The main goal aimed is to make the code reusable. Main goal of OOPS is to make the code reusable, maintainable, scalable, and secure. Why do we use OOP? Without OOP, code defines repetitive, difficult to maintain, difficult to extend. But with OOP, its code is reusable, easy to maintain, easy to extend, better security, better organization. Okay, so 4 pillars of the OOPS: encapsulation, abstraction, inheritance. एक और कौन सा होता है? Abstraction हो गया, encapsulation हो गया, abstraction हो गया, inheritance हो गया, polymorphism हो गया, polymorphism. Okay, so एक चीज oops पे याद रखनी पड़ेगी मेरे को कि what is the oops. Okay, why we do use oops regarding this, and 4 pillars of oops मेरे को करना पड़ेगा, right? Encapsulation क्या होती है? Okay, okay, so बहुत टाइम नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर अभी करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मेरा चल तो रहा है रिकॉर्डिंग, तो चलो कोई बात नहीं, चलती है, चलने दो, ठीक है? चल रही है, चलने दो, कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है? तो नाउ 4 पिलर्स, 4 पिलर ऑफ सोप्स, डेफिनेशंस एंड ऑल थिंग्स. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है एंड इंटरफेस होता है. सो इनहेरिटेंस होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म होता है. So it's actually different things. Oriented 1-2 minute. So object-oriented programming is a programming paradigm, the programming structure बोलते हैं, where we use model real world, where we use real world identities as objects containing both data and methods, behaviors, data and behavior. The main object is to make the software. Main objective is to make the software reusable, maintainable, and scalable and secure. OOPS is built on 4. OOPS is based on built in the 4 core principles. Encapsulation, which protects the data from restricting the direct access. Abstraction, which exposes only the necessary functionality. While hiding the implementation details. Inheritance, which enables code reuse by allowing one class to inherit from another. And polymorphism. Okay, so okay, so data by restriction, direct access. Abstraction, which exposes only the necessary functionality while hiding the implementation details. Inheritance, which enables code reuse by allowing one of the class inherit from the another, and which enables code reuse by allowing one of the class to inherit from one to another, from inherit from another. Polymorphism, which allows the same method or interface to have different implementations, which allows the same method or interface to have different implementation, either through the method overloading or overriding together. These are these principles. ओके, सारा लिखना पड़ेगा भाई, बहुत लंबा क्वेश्चंस के आंसर है, बट करना पड़ेगा. ओके, सो अगर मैं उप्स पूछूं तो उप्स होता क्या है? उप्स is a object oriented programming is a programming structure
where we model real world identities as objects containing both methods and data and methods behavior. The main objective is to make the code reusable, maintainable, secure, and scalable. OOPS is built with the four principle: encapsulation, abstraction, polymorphism, inheritance. So which allows us to these four pillars, which allows the same method or interface we have to different implement, which allows us the same. Okay, so either the so these all principles help us to write the clean code and modular and flexible applications. तो इसको एक बार यहाँ से डालते हैं, लेट्स सी। मेरे को एक चीट शीट बनानी चाहिए एक्चुअली। यहाँ पर बनाए क्या? बनाते हैं। ओके, व्हाट इज ऊप्स कैसी होती है? सी शार्प ऊप्स। ओके, ये आई थिंक यहाँ लिखा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर द मेन फोर पिलर्स। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ तो होनी चाहिए थी, बेसिक्स ऑफ ऊप्स। सो एक्चुअली यहाँ से एक चीज़ होती है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द थिंग। ओके, सो लेट्स स्टेट दिस। ऊप्स है। ओके, ऊप्स मेरे को चीट शीट यहाँ पे बनानी पड़ेगी, दैट इज द थिंग। ओके, चीट शीट this one, I think we need to give another page for this. Okay, page is there and cheat sheet I will be there. Cheat sheet. Okay, so what can we do is we can do here cheat sheet. Make a cheat sheet on this. Create an image cheat sheet or oops, so that in future I will revise. Yes, very easily. Okay, so ये तो होता रहेगा. So let's say what actually I want to discuss what is the actually definition should be. So object oriented OOPS is the object oriented programming. In object oriented in OOPS, what is or OOP. So if anyone asks me what is OOP, then OOPS is a object oriented programming. Object oriented programming is programming structure where we model real world identities as a object and containing both data and behavior. And the main objective is to make code reusable, make software reusable, maintainable, scalable, and secure. OOPS is built on four pillars, four principles, which are encapsulation, polymorphism, inheritance, abstraction. With these all pillars, which help us to create write clean code, modular and flexible application, which helps us to write the clean code, modular and flexible applications. Yeah, that's the correct thing. Okay, so now interview question में I can do like this. Okay, so बन गया हमारा. Okay, so यहाँ पर आ गया हमारे पास. I can just copy paste this. Wait, I can check it. Cheat sheet. Okay, so I can here
Oops. Okay, so I can make it this upload images upload. Okay, upload image. It is taking more time. Okay, so what is oops? Okay, I can make it here. Let's discuss once by one. What is this? Okay, so what is oops? Oops is a programming structure that uses object classes, model real world entities is helpful to write the code that is reusable, maintainable, and scalable and secure. And with the four pillars, we can make the application more flexible, secure, uh, more flexible, secure, uh, more flexible and secure, more flexible and secure. हो जाएगा ना? More scalable and flexible, more scalable and flexible. Option is to write the clean, modular, and flexible application. Clean, modular, flexible applications. Okay. बट यही बोल दे बहुत ही oops is a programming structure that uses objects and classes to make the real world entities. It helps to write the code reusable, scalable, maintainable, and secure. Why do we use code reusability, easy maintenance, better scalability, modular, real world modeling, four pillars of encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism, one inheritance, multiple forms. Okay, so let's say EAIP. EIP? No. IEP? No. AP. ओके, एक चीज़ मेरे को लगती है याद दिलानी चाहिए इनको, जो मेरे को लगता है कि याद मेरे को आनी चाहिए. सो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताते हैं इस पर. So encapsulation, binding the data method together and restricting direct access to the data. How? So you cannot access your balance directly. You use method like withdraw, deposit. Okay. So this one abstraction. इसके अंदर क्या चल रहा है नहीं पता. Showing only the essential features and hiding the implementation details using abstract. Okay. So inheritance. Inherit from this. Polymorphism. One method we can use multiple times. Method name we can use multiple times. Okay. So VS hides data, hides implementation. Okay, implementation hides data, hides implementation. Okay, so this one is a private, public decimal salary. Get the salary. Set the value is greater than this. So you cannot access your balance directly. Withdraw, deposit, and balance. This one is a salary. Okay, decimals return salary. So data encapsulation is hiding the data, and abstraction is hides the actual implementation. How the break works, how you don't know how the engine works. So protect data from the direct access, shows only essential details to the user. Achieved using the access modifiers and properties. Achieved using abstract classes and interfaces. Focus on how data is protected. Focus on what functionality is exposed. So how data is protected, and focus on what functionality is exposed. Polymorphism type, compile time, runtime. Resolve that compile time, runtime. Same method name, different parameters. Same method name, same parameters. Same method name, same parameters. Okay, virtual or override. Okay, so I add out this class.
Blueprint and template or creating object instance of the class method with function method. Okay, property as modifiers refers to this. Current object refers to base class members. Special method call when object is created private internal special members to access the private fields. Okay, benefits of this one. Class object new inheritance public protected access mouse as override adds implementation. Okay, so it's a very good cheat sheet, but we need to something different. Okay, so for that what we need is I mostly forget about about four pillars. Is there any way to remember easily? Okay. Okay, so instead of memorizing definitions, remember them the story. There is a just way to recall them. Okay, so what's E app? EAIP मतलब EA जो होता था ना EA स्पोर्ट्स में जो IP रहती है वो वाली. Remember the sentence. Every app is our powerful. और क्या बात है, बहुत बढ़िया. So every app is powerful. So encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. So think of our car, my favorite, and product. Okay, so abstracting height complexity, inheritance patent class. So got it. Everything is nice. Every app is powerful. So actually, this one is very good thing. Okay, so factory pattern, memory management. So much things, right? So much things. Okay, so one another question I have actually. Write code, compile and language, resolve dependencies, build, publish, optional, execute, JIT, collision runtime execution, shutdown. Okay, so I have a cheat sheet regarding this. How the system design cheat sheet. Cheat sheet, I think, not sure cheat sheet people there or not. Cheat sheet, question cheat sheet, SLA. ओके, सो चीट शीट यहाँ पर तो नहीं है, कोई और नहीं, कोई और चीट शीट नहीं है. टेस्ट केसेस नहीं, इसमें तो नहीं है. देन उसके बाद उप्स में जाते हैं, उप्स में मिलता है, डॉट नेट कोर में जाते हैं, डॉट नेट कोर में मिलेगा कॉन्सेप्ट्स, डॉट नेट कोर रिवाइज मेथड्स. पॉसिबल है कि क्यू इन और सेंड.
चीट शीट चीट शीट डॉट नेट का कैसे बनाया था मैंने चीट शीट यहाँ पर मेरे को लगता है अलग से बनाना पड़ेगा चीट शीट का क्योंकि चीट शीट डिफरेंट में डिफरेंट हो रहे हैं सिस्टम डिज़ाइन में कहाँ रखा था मेरे को याद नहीं है कि सिस्टम डिज़ाइन ओप्स था ओप्स में रखा था या नहीं चीट शीट अब ये चीट शीट नहीं है चीट शीट ये भी है आई थिंक ये है क्या कोई ओके सो दिस वन सी sheet what is pointer inline variable function overloading extra union okay that is different thing hmm. of question bank roadmap PC roadmap complete practice for data structures so much things यार मेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है बट एक और क्वेश्चन पूछते हैं जैसे वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे होगा सो ये तो समझ गया एवरी ऐप इज पॉसिबल एवरी ऐप इज पॉसिबल एवरी ऐप इज पॉसिबल राइट एवरी ऐप इज पॉसिबल पावरफुल पॉसिबल तो होता ही है पावरफुल ठीक ओके सो यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर बोलना चाहिए ठीक है मैं बोल के करता हूँ अब ठीक है मेरे को कुछ चीज़ें अब जल्दी जल्दी में जाननी ये तो हो गया राइट अभी क्या था कि ये जो मैंने सी शार्प में ऐसा होता है कि मैं कोड लिखता हूँ उसके बाद उसका जो फ्लो होता है कि मैं डॉट नेट बिल्ड कर रहा हूँ उसकी जो डीएलएल फाइल्स होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं एंड उसके बाद उसका फ्लो कैसा होता है कि डीएलएल फाइल्स को डिफरेंट मशीन्स में किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इसको थोड़ा सा फ्लो अच्छे वे में बताओ मेरे को ताकि मैं इंटरव्यू में बता सकूँ विस्पर फ्लो डूड विस्पर फ्लो ये क्वेश्चन में बहुत कॉमन है इंटरव्यू जनरल देखना चाहता है कि तुझे रन होने तक का कंप्लीट स्टेप्स पता है या नहीं तो शीश आपको यस शी कंपाइलर रिसाइलन विल बी रिसाइलन कंपाइलर रहता है एंड आईएल इंटरमीडिएट कोड सेल मेटाडाटा बस असेंबली डीएलएल फाइल्स एंड एक्सी फाइल्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएलएल एंड एक्सी copy to the target machine runtime seller just in time compiler native machine code cp executes write the code extension build ये विजुअल स्टूडियो में बिल्ड सॉल्यूशन करते हैं तब सी शार्प रिसाइलेंट रन होता है एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज की मशीन कोड नहीं होता प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है डीएलएल बनती है डीएलएल कंपाइल फाइनली डीएलएल या एक्सी जनरेट करता है इसको असेंबली कहते हैं इनका अंदर क्या होता है डीएलएल सिर्फ कंपाइल कोड नहीं होता उसके अंदर होता है इंटरमीडिएट कोड मेटा डाटा मैनिफेस्ट ये कंपाइल इंस्ट्रक्शंस है मैंने मशीन लैंग्वेज नहीं है इसलिए बताता है कौन सी क्लास है कौन सा मेथड है कौन सी प्रॉपर्टी नेमस्पेस क्या है प्रेजेंट क्या है स्केलर को बताता है मेटा डाटा एग्जांपल फर्स्ट असेंबली डीएलएल को दूसरी मशीन में कैसे कर चलाते हैं तो तुमने बिल्ड कैसे किया अब इसको सर्वर लैपटॉप पे डूब कर उसे कहीं पर भी कॉपी करके उस यूज़र को रिक्वेस्ट भेजा है सेलर डीएलएल को लोड करता है डीएलएल को लोड करता है ये क्या करता है इसमें इस कमेंट तो ये डॉट नेट का इंजन है तो सेलर क्या करता है मेमोरी मैनेज करता है गार्बेज कलेक्शन और जो भी डीएलएल लोड करता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको चलाने की कोशिश करती है डीएलएल के अंदर मशीन कोड नहीं होता उसमें आईएल होता है स्केलर आईएल को जेट को देता है जेट कंपेयर नेटिव मशीन कोड में डालते हैं नेटिव मशीन कोड में बनाता है एंड सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर जाते हैं अगर डायरेक्ट मशीन कोड बन जाता है तो विंडोज
लिनक्स के लिए अलग एग्जीक्यूटिव नाम पड़ता है, यूज सेम डीएलएल। तो तुम्हारी मशीन डॉट रिपोर्ट सर्विस डॉट नेट बिल्ड, सी एस बनती है, डॉट नेट बिल्ड से डीएलएल फाइल्स बनती है, डॉकर इमेज बनती है, कुबरनेट्स बनता है, पॉड स्टार्ट होता है, नीड्स लोड्स डीएलएल करता है, जेट कन्वर्ट्स करता है आईएल में, एनजीपी एग्जीक्यूट्स कर देता है। अगर 100 मेथड्स हैं तो जेट सबसे मोबाइल करता है। When we write the code, it's a human readable source code. So during the build process, the resilient compiler compiles the intermediate code language, which platform independent along with the IL. It generates the assembly in the form of DLL exe that contains IL code and common language to load the assembly. Loads the assembly and provides the service like memory management, garbage collection and all things. And before execution, just-in-time compiler convert the DLL to the intermediate language, executes to the native code language, native machine language, because the assembly contains IL instead of platform specific machine code. Because the assembly contains IL instead of platform specific machine code. So same DLL we can run on a Windows, Linux, macOS as long as appropriate .NET as .NET runtime as well available. So actually this one is very good question asked by the interview. Oops, not ifs. Oops. DLL vs exe. Dynamic link library executable. Purpose contains reusable code and 3 point of application can run directly, can entry point main required as main method entry point used by other application assemblies and user was usability high, usually not usability. Okay, so this one is also there. So this is one of the most frequent to ask SQL questions. So purpose uniquely identify each rows. Ensure unique values. Null values not allowed. One null allowed SQL Server. Duplicate values are not allowed. Only one. Multiple unique keys allowed. Okay. Creates index cluster by default. By default. By default, unless specified otherwise. Non-cluster by default. Main purpose. Row identification prevents duplicate values. Yes, but it's mainly used to prevent duplicate values and that can be not available. Okay. Okay. What is the difference between inscription हो गया
abstraction work. Scenario based object can store. See, an object can store 50 student documents in class in single class object. Class object. An object represents single instance of the class, so normally one student object represents one student, not 50. New student object store one student data. How should we store? Dictionary, we can use list. Can one object contain 50 records? If that object has collection inside, object has collection inside. Yes, if the object has collection inside that. Can an object single student object is designed to represent one student, so it can only be stored. Object another class such as, however, an object has another class such as classroom contain collection. More student. Easy rule to remember: one object of student, one student. One is according to the class which we are defining, because if there is one class for the student only, so it cannot store the all the 50 student. But if we are using that list or dictionary in the class only, so we can add multiple students in the same object, same variable of a single object. Okay, so all these things I think done. क्वेश्चन हो गया, वो वाला क्वेश्चन कैसे करना था वो हो गया. देन सिनेरियो बेस्ड इंडेक्सेस क्या होते हैं, क्लस्टर पे लगते हैं, नॉन क्लस्टर पे लगते हैं. सो आई नीड टू गो लाइक ऑन नॉट अ फास्ट वे, बट वो हम करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे. ठीक है. सो आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं. आज के लिए इतना ही. इसके लिए आई थिंक और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. ट्राई करेंगे कि हम जितने टॉपिक धीरे धीरे कवर कर पाएँ, जितने टॉपिक धीरे धीरे कवर कर पाएँ उतना ज़्यादा सही है. ओके, आज के लिए 1 घंटा कर दिया है. रात के काफ़ी बज गए, ज़्यादा सोते हैं. मैं सोने जा रहा हूँ. और इसमें यह है कि आई थिंक मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मेरी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ऐसा समझाना भी और ये सारी चीज़ें. सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, चलो ठीक है. बाय बाय गाइस. आई थिंक सारी चीज़ें हो गई हैं. ओके देन फाइन. बाय 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 बाय.